Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 30 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen a handler function, that what is a handler function and how we can register a handler function. And to register a handler function, we use a built-in function that is called set_new_handler. So इस function को हम handler function का नाम बता देते हैं, that is the function pointer to that function. And the handler function will be executed whenever a new operator is failed to allocate memory dynamically. ठीक है? So जब भी new operator fail होगा, it execute the handler function. Why? Because we have already registered a handler function using set new handler. If we want to register handler function using a set new handler, then it will throw a bad alloc exception. So using a handler function, we have a uniform way to handle all the new operators that have been used in the program in a same way. अगर आपने program में 10 जगह new operator use किया है, and if any of the new operator throw the exception, that means it finds any problem in allocating memory due to any reason, it will execute the handler function, all the new operators, जितने भी operators आ रहे हैं, right? Then we have seen standard library, exception hierarchy, and an example program at the end. The example program is about the queue class using array, in which we have first write a simple queue class, then we convert it into the template, then we incorporate the exceptions, and then we have seen that exception can be defined outside the class. Right, so these are the two exceptions, and this is the queue class. So यहाँ पर आपके पास queue class का तमाम कोड आ सकता है, right? So in today's lecture, we will first continue with the second example program, a linked list data storage class, and then we comes to the stream and classes. What is a stream and classes? Built-in classes, library classes provided by the C++, input and output streams, IO stream class. We'll see what is input and what is output stream. Then we'll see IO stream class, iOS class, iStream and OStream class. So iOS is the base class. So तमाम की तमाम stream classes इस iOS जो base class है, iOS इससे drive हुई हुई है, right? We will see कि कौन सी class किससे drive हुई हुई है. For example, iOStream class is derived from iStream and OStream class, right? And iStream and OStream class are derived from the iOS class. And in iOS class, we will see formatting flags. What are the formatting flags that we can use to format the output of the program? And then error control, error status bit. For example, if we are asking the user to input an integer value, and what if the user input character value or a string, right? So एक कोई character input कर दे या string input कर दे, then he presses the enter key, then how to handle that error. And then the file operation, that is file IO. So maybe file IO we will see in the next lecture. And so let's start with the linked list data storage class. So that is the exercise program 2 from the previous lecture. A linked list data storage class. So we are implementing a linked list data storage class. So a linked list consists of a group of nodes. Linked list, a list that is linked, right? And that is a list that is a group of nodes with which together represents a sequence, right? Node 1, node 2, node 3, node 4, and they are connected with each other, right? So this is a node 1 that contains a data, so a data part of the nodes and a pointer. This is another node, data and pointer. So data में किसी type की value हो सकती है. It could be a single data, it could be a group of data, right? For example, group of data could be a student ID, student name, registration number, CGPA, and all those things. And it could be a single value like any integer value. Right, so these are the nodes, and these nodes are linked together because we have a pointer. So this pointer, ये जो pointer ptr है, it is a pointer variable, and this pointer points to a next node. This pointer contains a memory address where a next node is present, right? जहाँ पर next node को memory allocate हुई है, उसका address इस ptr pointer के पास होगा. Similarly, second node also point to some memory location and also point to some memory location. Then we have a pointer,
a pointer that points to the first node in the list. ठीक है, so that is the start of the list. ये pointer है, इसको first pointer कह लें, let's say कोई भी नाम इसको दे दें. Now this pointer points to the first node in that list, right? So whenever we want to print the list, we can print the list by starting with that pointer. ठीक है, हम इस pointer से start कर सकते हैं and we start printing the element of that list, right? So the last pointer, the value of the last pointer is null, so that represents the end of the list, right? Okay, null जिस node का जो pointer है, if that pointer is a null, this means that it is not pointing to the next node, then this means that this is the end of the list. So what we can do, if we want to print the data present in the data value present in the list, we start with the first pointer here. We can start from this point and then we start move forward because we have address of a first node here. So we can go to the first node, print its data, इसकी डाटा को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर, and then we have an address of a second node and then we can display or print, we can go to the second node, print its data, then we have a pointer to a third node and we can go to the third node, print its data, and then we have a pointer to the fourth node. ठीक है, so we go to the fourth node and print the data, and then this pointer won't point to any other value. ठीक है, so किसी को point नहीं कर रहा, so we represent it like it's a ground pointer or it's a null pointer like this with this symbol. ठीक है, so इसे आप represent कर सकते हैं इसको. So this means that this is a null pointer, it's not pointing to any value, to any other node, right? So if we want to insert a node, insert a data, we have to insert it at the end at this point. So जब भी नया node आपने insert करना होगा, we move onward until we find a node whose pointer is null, and then we assign the address of new node. हम एक नया node create कर सकते हैं and then we assign the address of that node to this pointer. So जब इस pointer को assign कर देंगे, this means that this pointer now points to this memory location and the new node's pointer is basically then null. So इस तरह से node आप insert कर सकते हैं. If you want to delete any node, you can delete it. ठीक है, we can delete it from the end, we can delete it, for example हम यूज़र से कह सकते हैं कि कोई भी डाटा इनपुट करो, कोई भी वैल्यू जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं, and then for example if we want to delete that node, ये वाला नोड हम डिलीट करना चाह रहे हैं, so what we can do is simply इस नोड का एड्रेस जो है we can assign the address of this node to this pointer here. ठीक है, इसको असाइन कर देंगे. Now the connection, this connection will be lost and this new connection will be established, right? So हमारे पास node जो है it is basically a group of two things, right? A data and a pointer. So the preferable choice is to make a structured node. So इसका template हमने बना दिया है. Initially when we write a program, we just make the program using a single basic type, right? And then we convert it to the template as we did in the previous example. So यहाँ पर, so we have a structure node whose name is node, and a data whose type is type, that is a template type, and a pointer next. Now the type of the pointer is node pointer. How much memory will be allocated for this next pointer? Only 4 bytes. The type of the pointer is node. This means that the pointer next points to a memory location where we have a data of type node, जहाँ पर एक पूरी node के लिए memory allocate हुई होगी. So next pointer एक ऐसी memory को point कर रहा है जहाँ पर एक node exist करता है, right? Then this is a class definition. In the class definition, whenever we create a linked list, object of a linked list, the name of the class is linked list. Whenever we create an object of that class, we mention the type, right? So इसको हम बाद में देखेंगे कि हम type में convert कैसे करेंगे, right? So अभी हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहे. So first we write a very basic thing, then we test it, and then we convert it into the template, and then we incorporate exceptions. So इसके पास जो linked list का object होगा, इसके पास सिर्फ एक pointer है, ठीक है? The first pointer. So that is the object, ठीक है? ये एक object है linked list class का.
इस पॉइंटर का नाम आप फर्स्ट करते हैं, राइट. नाउ दैट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ फर्स्ट नोड ऑफ अ लिस्ट. तो उसमें लिस्ट में n नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं, आपके पास 1000 नोड्स हो सकती हैं, 4 नोड हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंटर किसी नोड को पॉइंट ना करे, right. So we can make that pointer initially null, right. Now I hope now you get an idea what is a linked list, and when I will be writing a code, I will try to explain the things in more detail, right. So a linked list is a collection of nodes, and each node is composed of let's say minimum 2 things and maximum could be any number of things. So structure में आप कुछ भी लिख सकते हैं. You can write student ID, name, registration number, address, CGPA, age, so all these things, right. So then the size of the node becomes much larger than we have right now, ठीक है. And each node contains a pointer whose type is node, and that pointer points to a next node, ठीक है. So ये जो नाम हमने रखा हुआ है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नोड है. नाउ ये जो पॉइंटर होगा स्ट्रक्चर के पास, इसकी टाइप क्या है, नोड है. दिस मीन्स दैट दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी हैव अनदर स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड, ठीक है. सो उसके पास जो मेमोरी एड्रेस, उसके पास जो पॉइंटर होगा नेक्स्ट, वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करा होगा जहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर नोड टाइप का एलिमेंट मौजूद होगा, राइट. ओके, नाउ लेट्स गो टू द प्रोग्राम एंड स्टार्ट राइटिंग. Okay, and then we have to write a class definition. Class, before that we have to declare a structure. So struct, name of structure is node, integer data, and node pointer, the name of pointer is next. It points to the next structure, and if it is the last structure, the value of that pointer is null. So if it is the last node in that list, then the value of that node's next pointer will be null. Otherwise it will contain a memory address, and on that memory address we have a structure or element of type node. Okay, that is the structure. Now the class name is link list, right. So the only data member of the class is the pointer, a pointer whose type is node. That means it is pointing to a memory location where we have a node type element stored, ठीक है. So private data member है, and node type का pointer है, इसको हम name दे देते हैं first. This means that this pointer points to the first element in the node, right. Then public, let's make a constructor. इसको null से इनिशियलाइज कर देते हैं. Okay, then how to insert. So first we write two functions, insert element in the list and display, ठीक है. So ये दो फंक्शन हम लिखेंगे, that is add item. So the return type is void. So the item to be added must be passed to that function, ठीक है. इस फंक्शन को पास होगा कि किस टाइप का डाटा ऐड करना है. So हमने लिखा हुआ था कि इंटीजर टाइप का डाटा ऐड होगा. So we must have integer over here. Its name is x. Okay. Now we have to create a new node. So नोड टाइप का एक नया नोड क्रिएट करेंगे, एंड हुज एड्रेस
स्टोर इन अ न्यू नोड पॉइंटर। सो एक न्यू नोड पॉइंटर ले लिया है और एक नया नोड क्रिएट किया हमने, ठीक है। सो न्यू नोड, सो एक नया नोड ये क्रिएट करेगा एंड इट विल रिटर्न अ मेमोरी एड्रेस एंड दैट मेमोरी एड्रेस विल बी स्टोर इन दिस पॉइंटर, ठीक है, इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, राइट। एंड देन न्यू नोड कि डेटा सेक्शन में we want to store the value x. So now new node is a pointer that points to a memory location, so where we store a structure of type node. Now if through that pointer, if you want to access the element of that structure, we use the name of the pointer and then the arrow operator, right? And first is equal to new node and new node is equal to so new node is equal to null, right? So when we call first time add item function, this will work perfectly fine, okay? So first when we create an object of a linked list, now think that the memory is allocated for that object and a pointer first is inside that memory location and the value of that pointer is null currently, okay? And then we call a add item function with that object. Let's say the name of the object is L1. We call a function L1 dot add item 6, right? So it will create a new node, and with this statement it will create a new node, and the address of that node will be stored in the pointer new node, ठीक है। न्यू नोड पॉइंटर जो हमने बनाया है उसमें स्टोर हो जाएगा। अब न्यू नोड पॉइंटर के डाटा में वी इंसर्ट x, सो उस नोड के जो डाटा सेक्शन है उसमें हमने x वैल्यू दैट इज 6 वैल्यू इंसर्ट कर दी है। न्यू नोड के जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू को हमने नल कर दी है, सॉरी, ठीक है। न्यू नोड को हम नल नहीं करेंगे, न्यू नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है। सो बिकॉज वी वांट टू स्टोर add insert item at the end of the list, ठीक है, and first points to a new node now, right? Now if we call add item function second time, so उस टाइम पे वो नया नोड क्रिएट करेगा, लेट्स से विद द वैल्यू 7। नया नोड क्रिएट करने के बाद उसने एड्रेस सेंड कर दिया न्यू नोड को, न्यू नोड के डाटा में वो इंसर्ट 7 और न्यू नोड का नेक्स्ट हमने नल कर दिया है और फर्स्ट में हमने न्यू नोड इंसर्ट कर दिया। दैट मीन्स फर्स्ट की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवरराइट हो चुकी है। दैट मीन्स जो उसने नोड 6 का जो एड्रेस होल्ड किया हुआ था दैट इज ओवरराइट नाउ, एंड नाउ इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नोड दैट हैज़ अ वैल्यू 7, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज we first create a pointer of node type whose name is current and we initialize it with the first, ठीक है। now we move the pointer forward, हम pointer को move करते रहेंगे forward। कब तक move करते हैं? बिकॉज हमने add item करना है उस node के end पर जिसका next pointer की value null होगी, ठीक है। so what we have loop while current next, so current का हमने next pointer एक्सेस किया। current firstly किसको पॉइंट कर रहा होगा? first node को, because first pointer के पास एड्रेस होगा first node का, so current pointer is pointing to a first node। so first node का next को चेक किया, if it is equal to null, if it is not equal to null then we start moving further। so current is equal to current arrow next। so ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है कि करंट फर्स्टली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है।
सो फर्स्ट नोड का जो नल है दैट लेट्स से हमारे पास लिस्ट में दो नोड्स हैं, राइट। सो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल नहीं होगा बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। सो दिस मीन्स दैट करंट जो पॉइंटर है इस टाइम जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है दैट इज नॉट नल। दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड नोड। Then what we did is current is equal to current next. So current की वैल्यू क्या हो जाएगी, current next. So current पॉइंटर के थ्रू हमने फर्स्ट नोड तक गए और उसके नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू से करंट को इनिशियलाइज कर दिया। दिस मीन्स दैट नाउ करंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड नोड बिकॉज करंट पॉइंटर की वैल्यू वही हो गई है जो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू थी। फर्स्ट नोड के नेक्स्ट की वैल्यू हमने इस तरह से एक्सेस की और उसको राइट कर दिया करंट में। नाउ वैल्यू ऑफ करंट इज अपडेटेड, प्रीवियसली इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। और लिस्ट में हमारे पास दो ही नोड हैं, दिस मीन्स दैट सेकंड नोड का जो नेक्स्ट है दैट इज नल। नाउ यूजिंग अ लूप वी चेक करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, करंट जो इस टाइम पे सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। नाउ चेक द next pointer of the second node. If it is not equal to null, then execute this. So the condition is current arrow next. This means the pointer next pointer of the second node, if it is not equal to null, that is the condition is false because that pointer is null because that is the last नोड। सो सेकेंड नोड जो थी वो लास्ट नोड थी हमारे पास लिस्ट में, सो वो पॉइंटर नल पॉइंटर है। दिस मीन्स दैट दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड वी कम आउटसाइड द लूप ओवर हियर। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट आफ्टर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप, जितनी दफ़ा भी एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है कि लिस्ट में हमारे पास कितने आइटम्स हैं, ठीक है। सो लिस्ट में अगर 10 आइटम्स हैं इट विल एग्जीक्यूट 9 टाइम। लिस्ट में अगर 2 आइटम है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। सो जब कंट्रोल जहां पर हमारे पास आएगा, नाउ करंट इज पॉइंटिंग टू अ नोड हुज नेक्स्ट इज नल, ठीक है। सो करंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ नोड हुज नेक्स्ट इज नल। सो व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी क्रिएट अ न्यू नोड एंड अब हम ये कर सकते हैं कि न्यू नोड क्रिएट कर दिया और उस न्यू नोड का जो एड्रेस है वो हमने इस पॉइंटर में सेव कर लिया, न्यू नोड का एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है। इसका नाम रखते हैं न्यू ptr। नाउ व्हाट वी डू इज सिंस द करंट इज पॉइंटिंग टू अ नोड इन द लिस्ट दैट इज द लास्ट नोड, सो उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम आ जाएंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे न्यू ptr से। सो न्यू ptr से उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने एंड देन न्यू नोड में डाटा इंसर्ट कर दिया, x जो डाटा था, और न्यू नोड का नेक्स्ट जो उसको नल कर दिया हमने, राइट। सो इस स्टेटमेंट को हम निकाल देंगे यहां से। So if first is equal to null, then this statement must be there. First को हम इनिशियलाइज कर देंगे न्यू नोड के साथ नहीं, न्यू ptr, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास न्यू ptr है और यहाँ पर भी हमारे पास न्यू ptr है, ठीक है। So these statements connect the last node in the list with the newly created node। ये जो newly created node हुई है इसके साथ इसको लिंक कर देगा because last node का जो next है उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं new ptr से। new ptr के डाटा सेक्शन में हमने x की वैल्यू इंसर्ट कर दी, that is passed to this function over here, and इस new ptr के next को हमने null से इनिशियलाइज कर दिया है। now that newly node becomes the last node in the list, ठीक है। then उसके बाद हमने चेक किया now why this condition is necessary। Why this is necessary? Because अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड आइटम कर रहे हैं, आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट लिंक लिस्ट का, देन उसका फर्स्ट पॉइंटर इनिशियलाइज हो जाएगा नल वैल्यू के साथ। नाउ इफ यू आर क्रिएटिंग, इफ यू आर एडिंग फर्स्ट वैल्यू इन दैट ऑब्जेक्ट,
तो उस टाइम पे फर्स्ट की वैल्यू नल होगी. देन वी व्हाट वी डू इज हमने जो नया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे फर्स्ट के साथ. ठीक है, सॉरी, जो नया हमने नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस असाइन कर देंगे फर्स्ट पॉइंटर को. नाउ द फर्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू दैट फर्स्ट नोड इन द लिस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी दैट okay, that will work, no problem. Do we need this thing or not? Let's say if I comment out this thing, now the first is null. Assume that first is null. So current पे हमारे पास null आ जाएगा. So null का next is not equal to null. So that is false. So control come over here, it create a new node. So this is necessary, this is required basically. So what we do is we can write it over here. Let's first check out whether it works or not, right? And then the other function we want to add is display function that display the content of the list. Now in that display function we first create a pointer node का हम pointer create कर लेंगे current, because we won't want to move front. ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर हम फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहे. फर्स्ट पॉइंटर हमेशा लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंट करेगा. इफ वी राइट फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, देन दिस मींस दैट फर्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड. ठीक है, सो हम फर्स्ट पॉइंटर को चेंज नहीं करना चाह रहे. इज इक्वल टू फर्स्ट while current is not equal to null. See out. To print the data, and then moving current to the next node. So now with that statement it points to the next node. That's it. Right, so this is display function. Now let's make a main function and create an object of a linked list L1 dot add item 3 L1 dot display system pause. Now let's see whether it works or not. Compile it first. Okay, execute it. There seems to be some memory leakage. Okay, close the program. I think the problem is with the add function. Okay. Okay, so the problem is with the add function. Now let's once again, yeah, so we have to write a different code for the first time adding the node and for the rest of the time, second, third, fourth. ठीक है, so first time के लिए separate code लिखना पड़ेगा. I think that is the problem.
that is the code, same code. So if first is null, then create a new node, and then न्यू नोड के डाटा में इट इंसर्ट x, न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर देगा एंड फर्स्ट को पॉइंट करवा देगा न्यू नोड में. एल्स, सो दैट इज द एल्स पार्ट. ठीक है, एल्स में कब आएगा? जब इसका मतलब है कि ऑलरेडी नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं लिस्ट में, देन इट कम्स टू द एल्स पार्ट, राइट? Because then first is not null, right? Then it comes in the else part, it creates a pointer current, initialize it with the first, then we start moving the pointer because we have to find the node whose value of the null is, whose value of the next is null, right? Then this means that that is the last node. Then we create a new node. So this is the common code. What we can do is we can put that code over here outside. So इस कोड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ at this point. ठीक है, in order to avoid redundancy, same code in order to avoid the same code, and right. So we have already created this thing. We have already did these things. Okay, now let's see whether it works or not, if the problem is solved or not. Press any key to continue. Okay, now let's comment out the display function, compile and execute. Let me change the font size first. 50, 55, 30. Okay, so now it displays the value 3. Now let's say if we want to add more item, L1 dot add item 4, L1 dot add item 5, and then okay, there's one more thing, that we are creating a dynamic memory. ठीक है, so इसके लिए कंस्ट्रक्टर भी अगर हम बना दें जिसमें वो मेमोरी को डी एलोकेट कर रहा हो, राइट? So 3, 4, 5. Now seems like it works perfectly fine. Now if we make a constructor that deallocates the memory whenever the object of this type is deleted. So हम deallocate कैसे करेंगे? If we first make a we have to delete from the last, basically while, so हम लास्ट नोड को पहले डिलीट करेंगे, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, एंड सो ऑन. ठीक है, while current next is not equal to null, is equal to arrow next. ठीक है, so हम current pointer को अब last में ले आए हैं. So now the current pointer is pointing to the last node, right? At this point I think we should have a pointer to go back to the previous node, and that is the last pointer, right? So that pointer, or a previous pointer that points to the previous node. ठीक है, so without that it is very difficult to delete those objects. So let's
because we are able to write the destructor, but to delete the node, it's not like this that we delete the first pointer and it will delete all the nodes, right? We have to delete each node explicitly. हमें हर node को खुद से delete करना पड़ेगा. For that, if I delete the first pointer, then it will delete only the first node, not the rest of the nodes. ठीक है? But for that we have to go to the last node, then delete the last node first, then second last, then third last, until you go to the first node. ठीक है? Okay, now let's write the deletion function. Void delete. Let's write a del function. So it will delete the last item. जो last हमारे पास है node है उसको delete करेगा. For example, इसमें 2, 3, 4 node हैं और fourth node का जो null जो next pointer है, that is null, right? So for that we have to first create a node, a pointer, current, initialize it with the first pointer, right? Now current pointer is a pointer, it is pointing to the first node, and then we move the current pointer while current next is not equal to null. So this will move the current pointer. It will check कि first node का जो next pointer है, is it null? If it is not, then move it so that it will point to the next node. If it is null, then this means that current is pointing to a node जिसका जो next है वो null के equal है. Now at this stage we also need a pointer that points to the previous node. जो second last node है उसको point कर रहा. So we have to maintain 2 pointers here. ठीक है? Why? Because okay, we move the current and the current pointer points to the, now it is pointing to the, after the execution of this loop, when the control comes over here outside the loop, now the current pointer is pointing to a node whose next is null. That means that is the last node. Now what we have to do, we have to move one node back, and to go back we do not have a previous pointer. ठीक है? So एक kind of linked list होती है, double linked list, जिसमें हमारे पास previous pointer भी होता है, right? You will go through that list in your data structure course. So what we have to do is we have to create another pointer previous, right? And now before moving the current pointer to the next pointer, we initialize the previous with current, and then we move the current pointer to the next pointer. ठीक है? अब यहाँ पे करंट पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसकी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी. ठीक है? और दैट कंडीशन इज फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज उस नोड का जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है दैट इज नल. सो नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन बिकम फॉल्स, द कंट्रोल कम ओवर हियर. नाउ अब क्या कर सकते हैं, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, बिकॉज प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू द सेकेंड लास्ट नोड इन द लिस्ट. ठीक है? वो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, उसको आप नल कर सकते हैं. ठीक है? डिलीट करंट, एंड डिलीट करंट करेंगे तो करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है दैट इज द लास्ट नोड इन द लिस्ट, उसको वो डिलीट कर देगा और प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देगा. सो प्रीवियस पॉइंटर एक पॉइंटर है. करंट नोड अगर नेक्स्ट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस नोड उसे प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करेगा. करंट को आगे मूव करेंगे तो प्रीवियस उसे प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करेगा. सो करंट की वैल्यू को सबसे पहले आपने असाइन कर दिया प्रीवियस को, एंड देन you forward the current pointer so that it is pointing to the next node, right? So this is how it will work. Now let's check it out. L1 dot del, and then L1 dot display.
सो हमने एक दफ़ा del कॉल किया, जब del कॉल करेंगे then it should delete this last item, that is 5. ठीक है, compile and execute it. So 3 4 5 and then 3 4, right? So यहाँ पर हम एक और if लिख सकते हैं, if first is equal to null, then we print a message, see out. We can print a message that list is empty. Now can you think that there is an end point of that list कि इसमें कितने item हम insert कर सकते हैं? 10, 20, 30. Is there any end point, limit, the size of the list? No, there is no such things. Why? Because this is a linked list. You can insert as many items as allowed by your RAM. जो आपके RAM है उसमें जितनी मेमोरी है आप उतने आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. Then in the else part we have a loop. So this is to check कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट empty और उसको प्रिंट कर दे तो वो सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले कर दे. Now we can print over here list is below end line. So if I display the list over here L1 dot display, then at this stage it should print a message list is empty. Then we insert 3 elements in the list, then we display it. It should display these 3 items. You can input as many items as you want. Display, add item 6. So उसके बाद डिस्प्ले करेंगे 3 4 5 6 को डिस्प्ले कर देगा. And then we delete, we call a delete function one time, then display the list. So एक दफ़ा delete कॉल करेंगे तो 6 delete हो जाएगा. Let's say we call 2 times delete L1 dot del. Now compile it, okay, execute it. So list is empty first, then we insert 3 4 5 6 and then we display the list. So display the message list is below, values are 3 4 5 6. Then we call delete function 2 times and then it display the message list is below 3 4. So इसने 5 और 6 को डिलीट कर दिया. हम इसको डिलीट इस तरह भी कर सकते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें कि क्या वैल्यू डिलीट करनी है आपने, ठीक है. और हम ये भी कर सकते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें कि व्हिच वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, राइट. नाउ this program looks perfectly fine. So if we call this function delete function, let's say 1 2 3 4 5 6 times, now what happened, ठीक है. 1 2 3 4 5 टाइम्स है और आइटम्स कितनी है 1 2 3 4. So list is, it prints something, right? This means that there is some problem over here. So 1 2 3 4 5. So this means that it should print a message. For example, if we have to check in the if first is equal to null, then it print a message no item to delete, ठीक है. यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेगा there is no item to delete, see out, or list is empty. Now in the else part we can write a return statement over here as well. Just simply write return, right? In the else part it will create a current pointer and a previous pointer, while loop,
Now again, so let me check out. If we call this function over here first time, then will there be any problem? Let's check out. So list is empty, display the message, and let's say if we display the list, then what it said, list is empty, list is empty. So दोनों functions ने क्या दिया, list empty है. But now we insert 1 2 3 4 items in the list, and then so let's remove this statement. Okay, so if we want to delete that item, first item, for example, assume the case where we have a first pointer, it is pointing to a node, and that node is only the node in the list. So ठीक है, so वो एक node है list में. So current pointer से initialize कर दिया, previous pointer से initialize कर दिया, current pointer को null को next को check किया, it is null because that is the only node in the list. ठीक है, so current pointer उस first node को point कर रहा है, first node के next को check किया, that is null. So this condition is false. The control come over here. No, this is false. So the control come over here. So what it will do is so previous is basically nothing, right? Previous को हमने इनिशियलाइज नहीं किया यहाँ पर किसी वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है. सो अगर कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी में नहीं आता तो previous should remain current. ठीक है, then वो okay, so then previous should be null. इसको null से इसको sorry current से initialize कर देते हैं यहाँ पर, and then when it comes outside the loop, now the previous is also pointing to the first node in that array. So we can have a small check over here. If current is equal to first, then we are going to delete the first node in the list. ठीक है, जो एक ही node है हम उसको delete करना चाह रहे हैं. उस केस में what it will do is it will make the first to null, right? First को हम null कर देंगे, so list become empty, and then we can delete current. And otherwise, for example, if there are two nodes in the list, so अब क्या होगा अगर दो nodes हैं, so current is pointing to the first node, previous is also pointing to the first node, current के first node के next की value को check करेगा, it is not equal to null, it will assign previous को current से initialize कर देगा, okay, and then it will move the current pointer. Now the current pointer points to the, after the execution of this statement, current pointer points to the second node in the list. ठीक है, अब दोबारा इस statement पे आ जाएं. Now the second node का जो null pointer next pointer है उसकी value null होगी because that is the second node in that list, last node in the list. So this condition become false. Now the value of current is not equal to first. ठीक है, current की value move हो चुकी है, that means there are more than one node in the list, so it will come over here. अब previous जो node है वो first node को point कर रहा है और current जो है वो second node को point कर रहा है. So previous के next को आपने null कर दिया और यहाँ पर this should be in the else part, और इसको यहाँ से move करके
यहाँ पर लिख दिया. Now I think this should work fine. This should work. But let's see. Now we create 1 2 3 4 4 आइटम हम इंसर्ट किए. 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने इसको कॉल किया है. So let's say we insert only 2 items and we call it 3 times. Let's say 2 times कॉल किया, उसके बाद हम डिस्प्ले कर रहे हैं ऐसे. Close. Okay, now it seems perfectly fine because पहले 2 आइटम हमने इंसर्ट किए 3 4. Then we display those item here in this statement L1 dot display. So it display print the message list is below and write 3 and 4, and then we call 2 time delete function. Both of our delete का function call किया, and then we again call a display function. तो उसने लिख दिया list is empty now, right? Because it delete these 2 items. Now what if we call one more time delete function? Now compile and execute. Okay. So if we see the main, that is the main. So 2 item insert किए, display कर दिया, and then we call 1 2 3 times delete function. So ये third call जो delete function किया, display the message del list is empty, right? There is no item to delete, right? Or we can write display this message, there is no item to delete. So now this example looks perfectly fine. अब ये बिल्कुल सही काम कर रही है. We have a delete function, we have a display function, and then we have a add item function. Now let's convert that into the template, the keyword template, class A type. So data की type हमारे पास क्या है? A type है, right? And template class A type. What is the type of the node? That is a type node. What is the item added to be here? That is of A type. Okay. Or where else we have to make changes here? It is a type. The type will be identified at the runtime. That should be also be A type. Here we are creating another A type. Delete function may be A type, right? I think these are the places where we have to make changes. Yes, and now here we have to identify type int. Let's compile it. Static should be after the A type. Okay, I'll compile it again. Variable feed. There's no need for the angle bracket over here. Okay, so we have to create
ए टाइप नोड, ठीक है। सो हमें यहाँ पे भी लिखना है किस टाइप की नोड क्रिएट कर रहे हैं और उसी नोड टाइप के पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। एंड हियर एज वेल if we are creating another, no, okay, now if I execute this program, perfectly fine, same output. Now we can include the exceptions. So exception is the here we can throw the exception, delete exception. Let's say there is no item to delete, that print the message there is no item to delete. And then display में हम empty list की exception लिख सकते हैं, right? So we can have two exception classes, class empty and class no item. That is also the basically empty class exception ही है वो भी. So delete में भी ये basically this is a list is empty, so इसको empty exception ही कह देते हैं. But what we make is we make let's say a private data member string that display the origin of that exception, and we have a public constructor okay, जिससे हम initialize कर देंगे string s origin s. Then we have function whose return type is string. The name of function is get string to get the value of the string, and that function returns the value of that string. That is a getter function. So that is the class empty class, ठीक है. Now where we can throw the exception, so we can throw the exception over here, throw empty and initialize it with display. So जब exception throw हो गया, there is no need for the else then, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अब. So we can remove this bracket, else bracket, that is the function closing bracket. So the code become a little bit simpler. Here as well you have to throw empty and the argument to the constructor is del. It will tell which function throw the exception, and there is no need for the else part. So let's align the code. And this is the else bracket. Let's close it. Okay. Throw empty exception and throw exception over here as well. The 2 points to throw the exception, and we can put the code in the try block. Try all these things, and if something bad can happen, catch it in the catch block. empty e, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, and then we can display the message cout origin of. First we print the message, the type of exception, list is empty, and the origin for that exception is e dot get string end line, ठीक है. तो इसका ओरिजिन आ गया कि कहाँ किस ओरिजिन से एक्सेप्शन थ्रो हुई है.
सो अभी यहाँ पर इस केस में 2 हम वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं और 3 दफ़ा डिलीट का फंक्शन कॉल किया, सो डिलीट फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा. लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम. सो रिटर्न स्ट्रिंग, okay, not return string, returns origin. Okay, because origin is an object of a string. ठीक है, एक string का वो string type का variable हमारे पास. Close, we execute it. So list is empty, origin of exception is del, right? So that is how we incorporate exception handling in our class. And if we call a display function before we have something in the list here, so again it will यहाँ पर हमारे पास दोबारा वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा. So exception list is empty, origin of exception display, right? So आप इसके अलावा भी कोई भी एक्सेप्शन इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. यू कैन राइट एक्सेप्शन क्लास आउटसाइड इन केस ऑफ टेम्पलेट. जब भी आप टेम्पलेट क्लास में एक्सेप्शन लिखें, एक्सेप्शन को आउटसाइड डिक्लेयर करें so that there is no problem in the cache block. So last time हमने देखा था कि if we have exception class inside the template class, then we have some problem over here in the cache block, that we have to specify the exception class here as well. ठीक है, so उससे अवॉइड करने के लिए हमने एक्सेप्शन को टेम्पलेट क्लास से बाहर लिख दिया है, राइट. दिस इज़ द लिंक टेस्ट प्रोग्राम. आई होप कि आपने कुछ काफ़ी हद तक इसको अंडरस्टैंड कर दिया होगा, बट यू कैन सी द कोड एंड जो मैं लिख रहा था उसको आप खुद से कोड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल. और 1-2 एक्सेप्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं, सेपरेट एक्सेप्शन फॉर द डिलीट एंड सेपरेट एक्सेप्शन फॉर द डिस्प्ले, राइट. Now this is the end of our today's lecture. So in today's lecture we have seen the example program in much more detail, how we write a program. First we write the basic version of the program, and then we incorporate the exception, and first we convert that into the template class, and then we incorporate exceptions. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.